अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और ख़बर ले लें मेरे से। और मैं आपको पहले बता चुका था कि सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में शहबाज शरीफ जा रहा है और अब आपके पास बेस आ गई। ऑडियो जो लीक हुई है उसके बाद तो शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो क्या है क्या नहीं, मैं उसकी वैरासिटी भी नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के अगेंस्ट बहुत बड़ी एक साजिश है। शहबाज शरीफ को भेज के ताकि कोई नई हुकूमत ला के और नया वजीर आजम लाकर और वक्त गुजारा जाए। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो ये उसको टर्न डाउन करने के हवाले से भी एक बात हो रही है। वो एक इम्पोर्टेड सागदार तैयार कर लिया गया है और पहले तो यही कहा गया, बताया गया कि वो नहीं आ रहे, लेकिन वो पाकिस्तान आ रहे हैं और आके पेश होना होगा। एब्सकॉन्डर है, ट्रायल फेस करना होगा। अब ट्रायल तो रुकवा लिया हुआ इन्होंने। आप देखे चलाकियां देखे इनकी। ये वो माफिया और गैंग है जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है या उनके साथ लगा हुआ या उनके साथ उठना बैठना इन लोगों का मौजूद है। दूसरी जो बात है, अगर मान लें अगर वो ऑडियो जो है वो सही है, सच है, तो फिर शहबाज शरीफ ने अपना हलफ तोड़ा है। और हलफ जो है बैकग्राउंड में मैं चला रहा हूँ आपको, उस हलफ की पासदारी जो है ना बहुत जरूरी है इसके लिए। अब नहीं की है तो इस्तीफा तो फिर बनता है और इस्तीफा इसको देना चाहिए या जाना चाहिए घर। लेकिन ये आप और मेरे के लिए बेवकूफ़ बनाने की बात है। मैं इसको बिगर गेम प्लान कह रहा हूँ। बिगर गेम प्लान ये है कि शहबाज शरीफ को हटाना है। और नाम मैं बता देता हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी इज योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सागदार इज योर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर और सॉरी नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। और इस पर काम हो गया। ये जो आगे वो जो कहते नहीं तो अपना क्या कहें इसको, पंजाबी में कहते हैं वो टांके लाना यार अपने कपड़े नू। हम सॉरी, मैं मजाकन कह रहा हूँ। ये कोशिशें हो रही हैं, इसका नतीजा क्या होगा वो आप देख लेंगे। फिर यहीं पर इस जो शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बताया है और वो जो पाकिस्तान डूब रहा है और वो जो लफ्ज़ उसने कहे हैं वो बड़े तकलीफ से लफ्ज़ हैं, बहुत तकलीफ से लफ्ज़ है। उसके नुकसान क्या होने हैं वहीं से देख लेना। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे शहबाज शरीफ से जानबूझ के ऐसे काम करवाए जा रहे हैं। फेलियर तो है, अब वो अपने गले नहीं लेना चाहते। अब वो नया तजर्बा एक और लाना चाहती हैं, PML करना चाहती है। वो क्या अल्फाज कहते हैं जरा वो भी सुन लीजिएगा, आप लोगों के बड़े काम आएंगे। How can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawning gap between our asks and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged very quickly at lightning speed. Otherwise, time and tide wait for none. Debt swaps, debt suspensions, are those in discussions right now? In the shape of epidemic. It is waiting for us. Please help us in avoiding this disaster. If God forbid that happens, then all hell will break. Who's helping you right now? We know that a lot. You have very friendly countries, all especially. All hell will break, I'm telling you. All hell will break. Who's helping you right now? We know that a lot. You have very friendly countries, all especially. All hell will break, I'm telling you. अगर हुकूमत नहीं कराती है उसने तो। अच्छा, यहाँ मैं आगे कुछ और बातें मैंने कर रही हैं पहले, लेकिन यहाँ बिलावल ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं इमरान खान की ज़ात के बारे में और जिस तरह, और उनके पास जवाब नहीं था पाबंदी क्यों लगी है, जमहूरियत का बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना इतना आसान काम नहीं है, ना बेनज़ीर भुट्टो। अगर जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की लाइफ सुनी होती तो बिलावल भुट्टो की जुबान से ये अल्फाज नहीं सुनते कि वो यानी इस तरह। ये बड़ी एक तकलीफ से बात है, सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। To the unfortunate climate catastrophe, there's also a democracy catastrophe happening in Pakistan. Your government has banned 2 popular television networks. Journalists have been arrested and tortured. You have banned the broadcasting on television of speeches by Imran Khan, the leader of the popular opposition, whose chief of staff has also been arrested and tortured. This government of yours, 14 members of the cabinet are under indictment for corruption, as well as your prime minister. So my question is, as someone who supports human rights and democracy, how can you be part of this attack on the media, democracy, and human rights? And why should we support it? Thank you so much for your question. And that's no joke, because Pakistan is not just in a democracy crisis right now.
And Pakistan's struggle for democracy did not start a few months ago when Mr. Khan lost power. Pakistan has been, and particularly various political parties in Pakistan, civil society, human rights activists, have been struggling for democracy and civilian supremacy in Pakistan for decades now. And as you're well aware, democratic progress in Pakistan has been sort of 2 steps forward, 1 step back, 2 steps forward, 1 step back again. We saw a fundamental shift in the right direction after the unfortunate assassination of my mother in 2007, where Pakistan made fundamental democratic reforms, constitutional reforms, restored our 1973 constitution, devolved power from all-powerful presidents and individuals to parliament and to, more importantly, the provinces, or what you would see as states. And we saw a drastic improvement in whether it was media freedoms, the institutional functioning of democracy, the normative functioning of democracy. And I was very proud to say that despite having come from a family who'd been sort of the victim of the most brutal political repression in my country's history, where my grandfather was hanged and assassinated, where one of my uncles was poisoned and assassinated, the second uncle was shot and assassinated, and ultimately my mother was assassinated in an attack in Rawalpindi. I was very proud to be able to say that from 2008 and 2013, when my party was in power, there was not one political prisoner, there was not one, the media freedoms in Pakistan was at its height. There was nothing the media could say that we would, true or not, that we would undermine. So how do we have a situation now where the Committee to Protect Journalists is very critical? No, absolutely, I'm getting to that. Unfortunately, usually sound bites in 30 seconds don't cover such topics. So after an incredibly long struggle, after people had given their lives, we created this balance, this equilibrium in Pakistan's history for the first time. And we had one democratic government peacefully transition to the other. And they too could say that there was no political prisoner, that they weren't victimizing the press. But unfortunately, the powers that have never wanted democracy in Pakistan, never wanted this transition to succeed, worked consistently to undermine and reverse this progress. Those powers being And who? the answer was Mr. Khan. Mr. Imran was the perfect symbol, the perfect individual to take forward this mission, to reverse the progresses that we had made, which is why we had the 2018 general elections that the European Union, I don't know how many observers at the time, all had stated were not only rigged, but were incredibly rigged. In fact, all your media had cartoons of how Mr. Khan was brought to power. And we saw the cutting away of all the advancements we had made. We saw the pictures of political prisoners return, whether it was from my party, Mr. Sharif's party, not only sort of the active men in politics, but the women of their households, aunts, daughters, all taken into prison. And all these advancements that we had made seemed not only an imminent threat, but its stake of a permanent threat. But I guess the questioner is saying, what will you do to reverse all of this? This is where I'm coming to explain it, don't worry. So, in order to... अब चलते हैं हम आपको आगे कुछ 1-2 खबरें आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी हैं और वो आपको इस आप अंदाज़ा लगा लें कि आइलैंड गैस अथॉरिटी जो है वो नैब और FIA से बहुत तंग है और ये मुदाखले से वो बहुत परेशान है। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्री में कहा है 2020 में वो मुतालबा करते हैं
कि 5 लाख नए कनेक्शन का इजाफा हुआ, 6% कमी हुई और गैस की किल्लत 11% इजाफा हो गई। और यहाँ वो बैठे कि जो सबसे ज़्यादा तंग है, और इसमें कोई शक नहीं, मैं कई चीज़ों को जानता हूँ, वो बड़ी तफसीलात हैं, वो पढ़ने वाली हैं। सिर्फ आपके लिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इसी पे बात करना चाहता। लेकिन मैं याद रखिएगा, मैं जस्टिस नाम उमर अता बिंदयाल साहब के अल्फाज नहीं मैं भूल सकता, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। उन्होंने अपने क्या कहा है, अदलिया ने नजरिया ज़रूरत दफन करके जमहूरियत के क़याम में बुनियादी किरदार अदा किया। फिर समझिएगा कितने बड़े अल्फाज हैं। और ये जो रियासत और शहरियों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की बात है, ये उन्होंने कहा 9वीं बैनुल अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि सियाल सैलाब के मुतासिरीन के लिए बैंक अकाउंट बनाया गया है, जिसमें मुझसे समेत कॉन्फ्रेंस की शुरका जो हैं एहतियात जमा कराएं, और अदालतें कानून की हुक्मरानी कायम करने का बुनियादी मकसद है। यूसुफ गिलानी के केस में वाज़ेह किया कि अदालतें कानून की हुक्मरानी आइन से बालादस्ती कायम कर सकती हैं। और यह क्या, अदालत आइन की कमांड पर काम करती है। अदालत का काम रियासत और शहरियों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है। इसलिए अदलिया नजरिया ज़रूरत दफन करके जमहूरियत के क़याम में सुप्रीम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा अदालत ने तहरीक तमाम सहमियों की तहरीक को गैर आइनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की वजह से मुल्क ने पहली बार एक दौरान हुकूमत के दौरान इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली देखी। ये सारी जो बातें हैं, यानी उन्होंने एक बात बड़ी वजाहत के साथ कह दी। लेकिन ये चीज़ें भी सच आनी चाहिए कि कौन कौन लोग इस बता रहे थे कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगना है, कौन कौन लोगों ने ये सारी चीज़ें रखी और कौन कौन से किरदार हैं, ज़रा वो भी चेहरे में आने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इमरान खान साहब ने एक जो बात कह दी है वो बड़ी ज़रूरी है आपके लिए। और मैं पहले दिन से बात कह रहा हूँ कि असेंबलियों में आना चाहिए, असेंबलियों में आकर मुकाबला करना चाहिए। मैं तो पहले दिन से इस्तीफ़ों के खिलाफ था जी, आपको पता है मेरा इस पर स्टैंड बड़ा क्लियर है। लेकिन आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, इमरान खान साहब ने कह दिया, लेकिन इसको जोड़ दिया साइफर के साथ, इंक्वायरी के साथ, जुडिशल कमीशन के साथ, कि ये चीज़ें उस तरफ लेकर जाएँ और उस तरफ लेकर आएँ। अब इमरान खान, और ये याद रखिएगा कि आपकी बहुत बड़ी जीत इस कॉन्टेक्स्ट में है कि असेंबलियों में बैठकर आप एक दफ़ा नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अमल दोहराएं और दैन रिजल्ट से जो आपके साथ 20 जो है ना अपोजिशन का जो किरदार अदा कर रहे हैं, जो आपने अगर आगे असेंबलियाँ डिसॉल्व करनी है, उसका नया केयर टेकर सेटअप आने हैं, तो आइन का आर्टिकल 224 पढ़ लें आप। उसमें आपकी मुशावरत के साथ, यानी अपनी अपोजिशन की मुशावरत के साथ आना है। अपोजिशन लीडर अपना खड़े हैं, आपकी मुशावरत के साथ नया केयर टेकर सेटअप आएगा, आपको फ़ायदा है। क्यों ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं जिसके लिए आपके लिए मसाइल पैदा हो सकें। और आखिर में जो इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात में सलीम साफ़ी जो हैं वो अंदरूनी कहानी अब ले आए हैं, और उम्मीद है इसमें किसी न किसी तरफ से हालात और वाक़यात आपके सामने आएंगे। क्या बातें उन्होंने की हैं सलीम साफ़ी ने, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या ये इस तरह की यदि आम बंदा बात करे तो क्या उसको कोई एग्जम्पशन है? कोई इस तरह बात कर सकता है, इस तरह चीज़ों को खींच सकता है? लेकिन जो कोई भी खींच रहा है, जो कोई भी करना चाहता है, क्या उसको इजाज़त दी जानी चाहिए इस तरह की? उसका कॉलम जो है मैं वैसे ही बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ आपको समझने के लिए। जो उन्होंने मुलाकातें करने के अलावा सदर पाकिस्तान के हवाले से जो बातें की हैं, क्या चाह रहे थे, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई लड़के आप इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर ले लें, बेनज़ीर का दौर ले लें, नवाज शरीफ तो अब चले वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ चला गया, वो एक अलग बात है। लेकिन इमरान खान ने बहुत जल्दी जो है ना एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई कोई बात नहीं है। इन इदारों के साथ हमने चलना और इदारों के साथ हमें चलना चाहिए। अब देखना ये है, अगला बहुत आम हफ्ता शुरू होने वाला है, उसमें बहुत से फैसले होने हैं। एक तो इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च को, धरने को, रहीम यार खान के जलसे में जो बातें उन्होंने कह दी हैं वो क्लियर कर दी हैं, आपसे समझ सकते हैं कि अगला लाएमल क्या है। दूसरी तरफ इसको काउंटर करने के लिए जो है ना वो PDM नया वज़ीर-ए-आज़म लाएगी, और नया वज़ीर-ए-आज़म शायद खाकान अब्बासी का सुन रहा हूँ, अगर पंजाब में उन्होंने तीर चलाया तो पंजाब में वो पीपल्स पार्टी को वज़ीर लाना चाहेगी। ये कम लोगों से अगर चौधरी परवेज़ लाई आ सकते हैं, लेकिन ये 10 अक्टूबर से पहले भी होता तो मैं नहीं देख रहा। 10 अक्टूबर तक अगर इमरान खान ने अपने लिए आसानियाँ पैदा कर ली, चीज़ें निबेट ली, तो बहुत बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।